हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास में डिस्कस करबा ओटीटी 2014 आसथिबा इंग्राजी क्वेश्चन पेपर इंग्राजीर क्वेश्चन एवं आंसर ए क्लास में सॉल्व करबा जाकि आपन को ओटीटी 2014 पेपर 1 रे आसी। फ्रेंड्स, जदि आपन चैनल को प्रथम बार विजिट करछंती तबे निहाती भाबरे वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एही चैनल आपण माने 2013 रु 2021 पर्यंत जेते सब ओटीटी रो एग्जाम रे कहितला सब एग्जाम रो वीडियो गुडा आपण पाइ जिवे, जार लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दियछु। ता सहित फ्रेंड्स आपण ए पीडीएफ जदि चाहउचंती एहार लिंक ए पीडीएफ जाके हम टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दियछु। आपण माने टेलीग्राम को जाकी ए पीडीएफ टी पाइ जिवे। फ्रेंड्स, एठारे आपण माने जेकोसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दौना ना कहीं जेकोसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जेकोसी एग्जाम हो क्रैक कर बेस्ट मेथड हो पूर्व 10 वर्षर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करवा। पूर्व अवसर आसवा पूर्व 10 वर्षर क्वेश्चन पेपर गुड़ा को कौन एनालिसिस करवा। तो आपण ओटीटी 2013 रु 21 पर्यंत समस्त ईयर सल्व गुड़ा पाइबे। तो देखो इंग्राजी प्रथम क्वेश्चन नंबर 61। द रूम वाज फुल ऑफ डेस्क। द रूम वाज फुल ऑफ डेस्क ब्रोकन फर्निचर्स। तो ये जीव करेक्ट आंसर। द रूम वाज फुल ऑफ ब्रोकन फर्निचर ये जीव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62। ही लिव्ड इन ए डेस्क हैप्पी लिटिल दैट इज हाउस। तो ये जीव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। डेस्क आर गुड फ्रेंड्स। डेस्क आर गुड फ्रेंड्स जदि एटा आपण देखिबे कोटा करेक्ट आंसर वेरी गुड। यू ही एंड आई यू ही एंड आई अर्थात सी हो करेक्ट आंसर। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मीरा गोज टू स्कूल डेक्स ए बाइसाइकिल जहाँकि प्रिपोजिशन क्वेश्चन। तो मीरा गोज टू स्कूल ऑन ए बाइसाइकिल तो कोटा करेक्ट आंसर वेरी गुड सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 65। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस तो कोटा व्याकरणगत दृष्टि एक्सेप्टेबल जहाँकि शुद्ध सेंटेंस बा करेक्ट धाड़ी। तो यहाँ जब आप देखिए हाउ फाइन द वेदर इज। हाउ फाइन द वेदर इज कोटा हम वेरी गुड बी हो कारण गोटे विस्मय सूचक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। ही वाज बोर्न डेक्स at 6 PM on a Sunday in 1970 at 6 PM on a Sunday in 1970 ये is your right answer. Next, there was no milk left in the vessel. There was no milk left in the vessel. The cat drinks it all up. The cat drinks it all up. Very good. जहाँ had drunk. C is your correct answer. Next, question number 68. I have to go for Dex X-ray. I have to go for an X-ray कारण एक्सरे जदि आप देखिए एठारे आकि भावल उच्चारण होउची तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर एन लागिबो। नेक्स्ट देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई इट डेक्स। देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई इट इज गोइंग ऑन रेन। इट इज गोइंग ऑन रेन आगु वर्षा होई पारे जाके सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट मिस्टेक्स नंदी डज दिस डेक्स pleasure husband does not. What mistakes Nandi does this dish does not pleasure husband जहाँकि आपन को does not pleasure husband कोटा हो बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। देखो तो फ्रेंड्स 71 75 जहाँकि आपन पैसेज रिगार्डिंग क्वेश्चन गुड़ा करेंगे पैसेज क्वेश्चन गुड़ा करेंगे। तो फ्रेंड्स आपन ए पैसेज क्वेश्चन गुड़ा आंसर करने पूर्व आप गोटे इंपोर्टेंट कथा कही दूसरी। देखो तो फ्रेंड्स जो पैसेज आंसर मध्य आप कर अच्छा पूर्व कौन करेंगे जो पैसेज आंसर मध्य आप पूर्व एक क्वेश्चन गुड़ा थे प्रश्न गुड़ा थे कौन ओभरलुक करदे थे ओभरलुक करदे जहाँद्वारा आपको ये क्वेश्चन एवं ये पैसेज जहाँ आप बुझे ता मध्य गोटे कोरिलेसन हो आप शीघ्र ये आंसर गुड़ा दे पारे। तो पैसेज जो आप पढ़ी सारे आंसर गुड़ा कौन कौन हम आलोचना करवा। देखो 71 द पैसेज इज अबाउट डेस्क। द पैसेज इज अबाउट डेस्क तो ये कौटा करेक्ट आंसर वेरी गुड उत्तर हो आप हॉबीज सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 72 एटार कौन कहला स्टाम्प्स टीच यू डेस्क ऑफ द कंट्री। स्टाम्प्स टीच यू डेस्क ऑफ द कंट्री वेरी गुड जहाँकि द हिस्ट्री सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जदि आप देखिए 73 कौन देला ही कलेक्ट्स ग्रीक स्टाम्प्स ओनली बिकज डेस्क। ही कलेक्ट्स ग्रीक स्टाम्प बिकज ओनली बिकज डेस्क जहाँकि हिज फ्रेंड्स आर देयर हिज फ्रेंड्स लिव देयर कोटा हम सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 74
His father works in the garden because desk. His father works in the garden because of it is his hobby. It is his hobby. तो कोटा हबो डी हिजिबो करेक्ट आंसर जदि आपन पेसिटी पढिथिबे डी हिजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा 76 75 सी मेंस माय शर्ट मेंस मीन्स डेस्क सी मेंस माय शर्ट मेंस मीन डेस्क जहाँकि मेंस अर्थ होचे ए जगह रिपेयर बी हिजिबो करेक्ट आंसर रिपेयर्स नेक्स्ट आउ गोटे पेसेज तो फ्रेंड्स एटार मध्य आपण माने आंसर देबा पूर्व पेसेज टी को भलसे पढ़िबा पूर्व कोन करिवे पेसेज रो क्वेश्चन को देखिबे तापर पेसेज टी पढ़ी के बुझिबे तो देखंतु मार्कोनीज होम कंट्री वाज डेस्क मार्कोनी होम कंट्री वाज डेस्क तो मार्कोनीज होम कंट्री वाज इटाली इटाली बी हिजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट 77 द ओरिजिनल रेडियो सिग्नल ऑफ मार्कोनी वर डेस्क द ओरिजिनल रेडियो सिग्नल्स ऑफ मार्कोनी वर डेस्क जाके आपण को कोटा मोर्स कोड तो बी ए हिजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट 7 मार्कोनी जर्नी टू लंडन बिकॉज डेस्क मार्कोनी जर्नी टू लंडन बिकॉज डेस्क जाकि ही शाउट सपोर्ट फॉर हिज वर्क ही शाउट सपोर्ट फॉर हिज वर्क डी हिजिबो करेक्ट आंसर 79 the person who made Marconi popular was Dex the person who made Marconi popular was Dex जाकि अपन को के मार्कोनी को जाके पॉपुलर करथले वेरी गुड कोड हबो प्लीज बी हिजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट 80 Marconi had transmitted Morse code signals the word transmitted in the sentence means Dex Marconi had transmitted Morse code signals the word transmitted in the sentence means Dex जाके देखि बेटा कोड हबो आंसर to send an electronic signal a is the correct answer next 81 learning a language means dex learning a language means dex to learning a language means quote habo learning and using the language skill in appropriate situation learning and using the language skill in appropriate situation ताकि b is the correct answer next 82 studying english as a second language will help us dex studying English as a second language will help us next very good jaki to open window to the knowledge of the world to open windows to the knowledge of the world to C is the correct answer 83 which is not a guiding principle of NCF 2005 which is not a guiding principle of NCF 2005 jaki national curriculum framework 2005 रो गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल न तो एठारे उत्तर हे जिवो आपन को ensuring children providing job opportunity ensuring children providing job opportunity यह NCF 2005 रो उद्देश्य नहुई तो एटा बी जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 एटा कोन कहला आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू देखो तो फ्रेंड्स ए कोन देला English is the most widely spoken language in the world English is the most widely spoken language in the world এটা true बी कोन देला लर्निंग इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन एटा मतलब ठीक सी कोन देला इंग्लिश ब्रेड्स द गैप बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग जाके सी मतलब करेक्ट आंसर नेक्स्ट डी कोन देला इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज जाके भूल इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज डी इज द रॉन्ग आंसर जाके नॉट ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 Learner kono कहला learning is effective when the learners in the classroom are found desk learning is effective when the learners in the classroom are found interactive b is the correct answer next reading stories novels comics and cartoon facilitate desk reading cartoon facilitate desk reading जाके अपन को extensive reading b is the correct answer next 87 generalization and organization of ideas sequencing question and use of vocabulary are the soft skill of dex जाके एगुडा कार soft skill very good एगुडा को होचन अपन को writing रो soft skill बी इज correct answer next according to the learning teaching experts the yearly education of a child should be in dex जाके first language ए इज correct answer next 89 which of the following is not a basic mechanic of reading at elementary level जाके newspaper reading सी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा आज सेशन लास्ट क्वेश्चन इन कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू डेस्क इन कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राई टू कोट हैव करेक्ट आंसर वेरी गुड फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग ऑब्जेक्ट आर अचीव्ड फाइंड आउट द
what extent the learning objectives are achieved is your correct answer. Jai Hind, Vande Mataram.